सो डियर स्टूडेंट्स, इस क्लिप में हम सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस और सॉइल प्रोफाइल टच करेंगे। तो वीडियो छोटा बनाने के लिए इसको हम दो कंपोनेंट्स में, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक में फर्स्ट पार्ट में हम सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस डिस्कस करेंगे और साथ साथ थर्ड पार्ट में जो थर्ड क्लिप होगी उसमें हम सॉइल प्रोफाइल डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे। सो you know that weathering processes is actually responsible for the formation of soil, because the end product of the soil forming processes, that is physical, chemical and biological weathering processes, the ultimate and end product is soil clay formation. Clay minerals are formed, that means soil forming process takes place. So this development of soil is actually a series of complex processes. Weathering process starts from the surface downwards. Whenever rock is exposed at the surface, so subaerial atmospheric agents start operating on the exposed surface, and ultimately this process subject rock to disintegration physically and chemical decomposition, and biological process also aid in the physical and chemical decomposition of rocks. So that means soil formation begins when bedrock is broken down into smaller and smaller pieces or fragments. This is physical breakdown, and physical breakdown, it actually plays part to the speed up, or actually it catalyzes the chemical breaking or chemical decay and decomposition of rocks, bedrock, which is broken into smaller and smaller fragments. So the reaction speeds up more and more chemical process in the form of hydrolysis, dissolution, oxidation, hydration, carbonation. They further break down and change the parent rock material, broken or exposed parent rock material. So soil process, the soil formation begins, and besides these two processes, organisms, that means both flora and fauna, that means soil life. Soil life means plants and these trees and then bacteria, they also, and other organisms, and they also play their role, and they aid in the physical breaking and chemical decomposition of minerals. So ultimately the end result of these processes, all these processes, physical weathering, chemical weathering, biological weathering, they ultimately lead to the destruction, that means in disintegration and decomposition of minerals of rocks, which ultimately pave way towards the formation of soil. So whenever these processes are effective in bringing about disintegration, decomposition of rocks, so end result of these effective process, the effective soil formation. So that means end result of effective soil forming processes helps in the forming of soil, thick layers of soil. So with time, so there are actually certain factors which control this decay and decomposition of. Those are also known as factoring of weathering. They are also related, they are these environmental factors and ground condition, local condition. They also affect the soil forming processes. What are these factors? 4 or 5 factors. First is the natural climate. Climate plays very important role in the formation of, in the weathering, and ultimately in the formation of soils. For example, if we have glacial climate, we can have arid and dry climate in deserts. As semi-arid areas, we can have tropical, that means warm and wetter conditions in tropical and subtropical areas, or even temperate areas as well, or regions as well. So climate, whenever there is glacial climate, only physical weathering takes place. Only in glacial type of or cold climates, what happens? Only physical breaking or disintegration of rocks place. There is negligible this chemical decomposition. That means rocks are disintegrated, but the minerals, the chemical composition does not change. Minerals remain intact. They are partly decomposed. Similar is the case in
dry climate where moisture is least, where air is dry. So only what happens, insulation, that means thermal effect is there, expansion contraction, you know that. So only breaking, physical disintegration takes place, but there is negligible decomposition. So if there is warm and humid, that means warm temperature and wetter conditions, moisture is available, humid climate is there, vegetation is also there, good growth of vegetation. So it ultimately leads to both physical and chemical decomposition of rocks. So then nature of parent rock, that means mineral composition of rock. If the resistant mineral are there, less like in granite, we have more quartz. It is the quartz is resistant to chemical alteration. We can have limestone somewhere else. Limestone is compositionally CaCO3, calcite mineral dominantly present in limestone. So if we compare these two rocks, and these rocks are in a similar condition, for example, in warm and humid climate, we have granite as well as we have this limestone. Limestone will also be weathered, granite will also be weathered, but लेकिन जो weathering का effect, जो rate of reaction होगी, जो dissolution process होगी, वो कैल्शियम कार्बोनेट में ज़्यादा होगी. That means limestone ज़्यादा weather होगी as compared to the resistant this granite rock, जिसमें silicates ज़्यादा हैं, particularly quartz जिसमें major component है. Then again we moving towards third, that is topography. That means slope है, steep slope, gentle slope, plain flat areas. Steep slopes पे soil formation नहीं होती है. जो भी weathering होती है, physical disintegration या थोड़ी सी soil जो बनती है, उसको gravity और wind जो है drag करके transport करके ये low lying areas, stable areas में जो है transport करती है. That means flats areas होंगे, low lying slopes होंगे, वहाँ पे soil formation, thick soil thickness of soil ज़्यादा हुई compared to the steep slopes, जहाँ पे almost negligible या थोड़ी सी thin veneer of soil जो है deposit होती है. Organic, again organic process, that means role of plants and animals जो आपने पढ़ा है, they play important role, or rather they aid in physical and chemical decomposition of rocks. Ultimately that leads to soil formation process, क्योंकि humus बनता है, humic acid बनता है, जब वाटर उसके साथ dissolve होता है, that leads to chemical decomposition of minerals. Then most important factor, one of the most important, that is time. That means कि length of time these weathering process operate in a particular area, operate on a particular rock, in a particular environment. जितना ज़्यादा time stable, जितना area stable होगा, या जितने time पे ये weathering process किसी area में या किसी bed rock पे या parent rock पे operate करेंगे, ultimately these physical, chemical and biological processes, उतनी उसमें maturity ज़्यादा होगी, उतनी उसमें जो alteration ज़्यादा होगी, उतनी उसमें mature soil develop या develop होगी या form होगी. जितने कम time, length of time जितना कम होगा, उतनी ही maturity of soil कम होगी या immature soil जो है वहाँ पे develop हो सकती है. So then ultimately we would say that a well developed mature soil जो होगी, उसमें बहुत सारे open spaces होंगे, abundant open space होंगे. That means between these fragments, clay fragments and rock fragments and mineral grains, pore spaces होते हैं. वहाँ ऑर्गेनिक लाइफ या ऑर्गेनिक एक्टिविटी भी ज़्यादा होती है, या ऑर्गेनिज्म एबेंडेंट होती है, ऑर्गेनिक लाइफ एबेंडेंट होती है. क्लेज भी बहुत सारे होते हैं. देन उसमें जो है ह्यूमस भी होता है, डेट मीन डिकेड ऑर्गेनिक डेब्रिस मैटर भी होता है. एंड देन वेरियस मिनरल्स, उनके ग्रेन्स और फ्रेगमेंट्स भी होते हैं. दैट इंक्लूड्स ऑक्साइड, दैट मीन एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड भी उसमें हो सकते हैं. ऑक्साइड फार्म में बहुत सारे मिनरल्स. देन जो है क्वार्ट्ज भी उसमें एबेंडेंट होता है. आपने मिट्टी में देखा होगा, या इवन सैंड में भी अगर आप देखेंगे, उसमें कुछ चमकती हुई फ्लेक्स जैसे दिखते हैं. दोज आर एक्चुअली क्वार्ट्ज ग्रेन्स, वेदर्ड माइन्यूट fragments of quartz which are resistant to decomposition, relatively resistant to decomposition. And ultimately जो है ये फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रोसेस से जो ये वेदर प्रोडक्ट्स बनते हैं. तो लास्ट टाइम जैसे मैंने कहा था आपको, जो वेदरिंग जो है वो इन सीटू भी होता है. दैट मीन्स
यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेटू एरियाज में, खासकर जिस तरह पेनिनसुलर एरिया में होता है, वहाँ पे जब पेरेंट रॉक वेदरिंग होती है, क्योंकि स्लोप कम होता है, ग्रेविटी का इफेक्ट भी कम होता है, तो वेदरिंग प्रोडक्ट वहीं पे डिपॉजिट भी होते हैं, रॉक फ्रेगमेंट, उनकी फिजिकल केमिकल डिकम्पोजिशन, बायोलॉजिकल वेदरिंग वहीं पे हो जाती है। इन साइटू सेल डेवलपमेंट हो जाती है सॉइल की, थिक सॉइल या थिन सॉइल कवर बनता है, उसको हम रेसिडुअल सॉइल भी कहते हैं। तो कहीं पर जो है यही सॉइल वेदरिंग प्रोसेस के थ्रू होके, थ्रू वेरियस स्टेज ऑफ प्रोसेस, अल्टीमेटली वो जो है जहाँ पे वेदर प्रोडक्ट बनते हैं, ये ट्रांसपोर्ट भी हो सकते हैं, अपनी जगह ये डिपॉजिट नहीं होते हैं। विंड, रनिंग वाटर, रिवर्स, स्ट्रीम्स, ग्लेशियर्स एट्सेट्रा, ये इसको जो है ट्रांसपोर्ट, या वेव्स, ओशन वेव्स, ये इसको ट्रांसपोर्ट करके ड्रिफ्ट करते हैं और किसी और जगह दूर, लॉन्ग डिस्टेंस, चाहे किलोमीटर्स में हो, टेंस ऑफ किलोमीटर्स में हो, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स में, कि किसी और जगह जो है डिपॉजिट करते हैं, जहाँ की बेड रॉक बिल्कुल डिफरेंट होती है, और ऊपर जो इसमें जो रिगोलिथ या वेदर्ड फ्रेगमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ क्ले, सॉइल, सिल्ट, सैंड एट्सेट्रा डिपॉजिट होते हैं, इसको हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं। सो अल्टीमेटली जो सॉइल डेवलपमेंट है वो रेजिडुअल सॉइल भी हो सकती है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल भी हो सकती है। तो अकॉर्डिंगली जो रेजिडुअल सॉइल होती है उसमें एक फीचर डेवलप हुआ होता है विद टाइम, उसमें डिफरेंट लेयर्स डेवलप हुए होते हैं, इवॉल्व हुए होते हैं, उनको हम सॉइल होराइजन्स कहते हैं। ये सॉइल होराइजन, ये सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, ये हम नेक्स्ट क्लिप में देखेंगे।